In lesson agriculture, yesterday you studied about shifting agriculture, which is also known as zooming, and there are many other names. And today you are going to study about intensive subsistence farming, which is practiced in a country like India, Bangladesh, Pakistan, where population pressure is very high. Intensive means very dense agriculture, right? That means per hectare production is very high. Okay. For a country like India, where population is very huge, very big population, we have to support the population regarding the food requirement. And therefore, intensive farming is most suitable for densely populated countries. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming. Why it is labor intensive farming? Because this region is of dense population and people require job. So most of the work is done with manual labor, where high doses of biochemical inputs, irrigation are used for obtaining higher production. And what are the other characteristic features? That in this type of agriculture, high doses of biochemical is used, irrigation facilities are also utilized. And why all these things? For obtaining higher production, because we have to support a very dense population of this region. Okay, so it is known as intensive subsistence farming. Intensive means very dense agriculture in which per hectare production is very high, and subsistence means to fulfill the food requirement of the whole population of that region. So it is also known as subsistence. Okay, so write a question here. Write chief characteristic features of intensive. Start writing. Are you ready with your note copy? Then write this. What are the characteristic features of intensive subsistence farming? Start writing. Following are the characteristics of intensive subsistence farming. Number one. Yes, ma'am. This type of farming is practiced. Point number one. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. Second point. Most of the work is done manually. Most of the work, second point, most of the work is done manually. So it is labor intensive farming. Ma'am, after manually? Manual labor, most of the work is done manually. So it is a labor intensive farming. Harsh, you repeat second point. I can repeat the second point. Huh. Most of the work is done manually. That's why it is known as labor intensive farming. लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है ना? ये एग्रीकल्चर जो है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज करते हैं और मैनुअल वर्क भी लेते हैं. थर्ड पॉइंट लिखिए. थर्ड पॉइंट, हाई डोजेज ऑफ
chemical fertilizers, high doses of chemical fertilizers, insecticides, weedicides are used. High doses of chemical fertilizers, comma, insecticides, comma, weedicides, WEED. Weedicides are used. Irrigation facility is also used for higher production. How many points have you written? This is next. Ma'am, now we are on third. On 4 points. Fourth point is irrigation facilities are also utilized for higher production. Next point number 5. The production per hectare is very high. मैम क्या? The production per hectare is very high. पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के लिए दूसरा वर्ड क्या है बताओ? यील्ड. क्या मैम? The production per hectare is very high. Clear? Yes मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये ना चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के. इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में, थाईलैंड, ये सब में ये एग्रीकल्चर ही ज्यादा प्रैक्टिस होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पर हेक्टेयर यील्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. Ma'am, can you please repeat the question? I can't write the question that time. What are the chief characteristics of intensive subsistence farming? अब चीफ क्रॉप्स क्या होंगे? चीफ क्रॉप्स, इसमें तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि खुद भी कि यहाँ क्रॉप्स कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं. मेनली सारे सीरियल क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, राइस, व्हीट, बनाना, मेज, ये सारे ग्रो करते हैं. ठीक है, बनाना का अलग है, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है. ठीक है ना. अब यहाँ से देखो, though the right of inheritance leading to division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. इसका मतलब ये हुआ कि जो right of inheritance होता है ना, जैसे एक फादर का जो लैंड है वो अपने सन्स में डिवाइडेड हो जाता है, फिर उसके सन्स में फिर अगेन डिवाइडेड, सब डिवाइडेड होता चला जाता है. So what is the result of this? That the agricultural land holdings become smaller and smaller in size, which is very uneconomic. ठीक है ना, लैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला जाता है, जो कि एक अनइकोनॉमिक प्रैक्टिस है ना. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is a enormous pressure on agricultural land. तो इस एग्रीकल्चर लैंड में लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि लैंड है कम और पॉपुलेशन प्रेशर है ज्यादा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. कमर्शियल फार्मिंग, नाम से ही क्लियर है. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स द फार्मिंग विच इज स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड टू अर्न मनी. ठीक है ना, इसलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखो. Write the chief characteristics of commercial farming. Write the chief characteristics of commercial farming.
अब देखो कमर्शियल फार्मिंग में भी क्या है, एकदम मॉडर्न टेक्निक से करते हैं एग्रीकल्चर, इसमें भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर, जितना भी मॉडर्न टेक्निक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सबका इस्तेमाल करते हैं। और पर्पस क्या है कि हमारा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। और ये प्रोडक्शन किस मोटो से, किस पर्पस से किया जाता है, ये सेल के लिए किया जाता है, अपने नेशनल मार्केट में या नेशनल इनकम हाँ, रीच तो करने। ये सेल करना ही इंटरनेशनल मार्केट। देखो जैसे पंजाब हरियाणा में वीट भी ग्रो करते हैं, राइस भी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो राइस वहाँ 100% वो सेल ही हो जाता है, और वीट है थोड़ा बहुत अपना कंजम्पशन हुआ, होम कंजम्पशन, वो भी सेल होता है। तो वो सब कमर्शियल में आ जाता है वहाँ। राइस भी कमर्शियल क्रॉप है, वीट भी कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, ये सब कमर्शियल तरीके से फार्मिंग होती है, जिसका उद्देश्य ही होता है कि मनी अर्न करना, ठीक है ना। Ma'am, can you please dictate the all the points so that I can write it? Which one? Ma'am, the question, write the chief characteristics of commercial farming. The answer of हाँ this question, ma'am. हाँ, okay, I am giving you. So following are the chief characteristics of commercial farming. Number one, it is practiced on modern techniques of agriculture. It is practiced on modern techniques of agriculture. For example, high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, insecticides, CIDES, insecticides and pesticides, modern irrigation methods, etc. ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा कि ये मॉडर्न टेक्निक पर ये एग्रीकल्चर होता है। Next point, the per hectare production is very high. The per hectare production is very high. Next point, the degree of commercialization. The degree of commercialization of agriculture. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. Agriculture varies from one region to another. Another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab. But in Odisha, it is a subsistence crop. Ma'am, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. राइस, वीट से लेकर कॉटन, इसमें कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं जो कि सेल के लिए होता है तो कमर्शियल क्रॉप कहलाता है, ठीक है ना। और ये मॉडर्न टेक्निक पे बेस्ड है। पर्पस क्या है? टू अर्न मनी, है ना। ये लिखे हो कि नहीं अपने पॉइंट में? नो मैम। तो ये लिखो लास्ट में, द चीफ एम ऑफ दिस एग्रीकल्चर, The chief aim of this agriculture is to earn money. To earn money.
So it is known as commercial farming. यस मैम हो गया। वो भी क्रॉप अपने इस्तेमाल से बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और उसको सेल करते हैं तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब कमर्शियल Ma'am, फार्मिंग, please repeat the last fifth point. हाँ, the main purpose or main aim of this agriculture is to earn money. So it is known as commercial farming. अब देखो Then एक, ma'am, हाँ, नेक्स्ट एक टाइप है, उसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो अभी तक कितने पढ़ लिए? सबसे शुरू में पढ़े आप वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़े। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में ही जूमिंग का भी एग्जांपल है, और उसके बाद दूसरे नंबर में पढ़े इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तीसरे में पढ़े कमर्शियल फार्मिंग, अब चौथे में आ जाइए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसका भी एक क्वेश्चन लिख लो, आज ये हो जाएगा। राइट, chief characteristic features of plantation agriculture. ma'am, which agriculture? Right, chief characteristics of the plantation agriculture. अब यहाँ देखेंगे कि कमर्शियल और प्लांटेशन में क्या डिफरेंस है। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी मेनली सेल के पर्पज से होता है ना, ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर भी एम पर्पस वही है कि क्रॉप्स को सेल करना है और कैश अर्न करना है। लेकिन ये कमर्शियल एग्रीकल्चर से डिफरेंट होता है थोड़ा, क्योंकि कमर्शियल एग्रीकल्चर में राइस, व्हीट ये सब आते हैं, ठीक है ना, जबकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिर्फ वही क्रॉप आते हैं जो कि सिंगल क्रॉप कहे जाते हैं, है ना, वो प्लांट हमेशा के लिए फील्ड में लगे रहते हैं। जैसे बनाना है तो बनाना हमेशा के लिए वहां रहता है फील्ड में, उसी में प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं और होता है। फिर कॉफी, टी, ये सब के प्लांट्स वही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कमर्शियल से डिफरेंट है। कमर्शियल में क्या होता है, टोटल हार्वेस्टिंग होती है फील्ड की, और यहाँ टोटल हार्वेस्टिंग नहीं होती है। टोटल हार्वेस्टिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे एक बार राइस ग्रो किए तो राइस जब तैयार हो गया तो उसका टोटल हार्वेस्टिंग हो जाता है ना, काट लिया जाता है फसल, पूरा काट देते हैं मैम, फिर लेकिन दोबारा से प्लांट करते दोबारा से फिर प्लानिंग करते हैं, फील्ड तैयार करते हैं, दोबारा से नए सीड्स लगाते हैं। और प्लांटेशन में क्या होता है कि वही प्लांट, वही ट्रीज रहते हैं फील्ड में हमेशा के लिए, चाहे वो टी का हो, कॉफी का हो, या फिर रबर है, कोकोनट है, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो लिखो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग which has Plantation agriculture is also a type of commercial farming which has following characteristics. अदिश्री रिपीट करो लाइन, क्या लिखे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में? Plantation agriculture is also a type of commercial agriculture. Which has following characteristics. Number 1, in this farming, a single crop is grown on a large area. Ma'am, please repeat the first point. In plantation agriculture is also a type of commercial farming which has following characteristics. Number 1, in this agriculture, a single crop is grown on a large area. Full stop. उसी में कंटिन्यू करना. This large area is also known as farm estates. This large area, एग्रीकल्चर का एरिया जो होता है ना, लैंड होता है, फार्म लैंड, वो बहुत बड़ा होता है। तो उस लार्ज एरिया को और किस नाम से जानते हैं? फार्म स्टेट, ESTATES, फार्म स्टेट्स के नाम से जानते हैं।
large area which is also known as farm estates. ESTATES. तो फर्स्ट पॉइंट में तुम क्या लिखे, दो बातें लिख लिए। एक तो कि ये सिंगल क्रॉप फार्मिंग होता है, मतलब एक ही क्रॉप उसमें लगा रहता है। टी है तो पूरे फार्म स्टेट में टी ही रहेगा, कॉफी है तो सिर्फ कॉफी ही पूरे फार्म स्टेट में रहेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉप फार्मिंग। हर एक साल वही क्रॉप रहेगा, ठीक है ना, टोटल हार्वेस्टिंग भी नहीं होती है। तो यह पहला पॉइंट हो गया। पहले पॉइंट में आप सिंगल क्रॉप और लार्ज स्टेट, लार्ज फार्म स्टेट, दो बातें लिखें। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ। It has an interface of agriculture and industry. Which is capital intensive. It has an interface of agriculture and industry, which is capital intensive, and the production is also very high, like industries, and the production is also very high, like industries. सेकेंड पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है इसको किससे कंपेयर करते हैं, एक इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज लाइक एन इंडस्ट्री, व्हाई, बिकॉज इट हैज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट like an industry, and the production is also very high like the industries, है ना। इंडस्ट्री को जिस तरह से चलाते हैं ना, वैसे ही क्वालिटीज चाहिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट रिपीट करो तो। Ma'am, I can. हाँ, Ma'am, it has an interface of agriculture and industry, which is capital intensive, and production is also very high, like industries. हाँ, ये बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह काम करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, इंडस्ट्री की तरह ज्यादा होता है, और प्रोडक्शन भी इंडस्ट्री की तरह ही लार्ज स्केल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, migrants laborers are used, migrant laborers are used। माइग्रेंट समझ गए ना, कि दूसरी जगह से आकर के लेबर इसमें काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा Migrate laborers. माइग्रेंट लेबरर्स, यहाँ देख रहे हो ना ये वर्ड, माइग्रेंट लेबरर्स आर यूज्ड। अब फोर्थ पॉइंट लिखो, the produce is used as raw material। the produce मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। the produce is used as raw material in respective industries। Ma'am, repeat the point. the produce या the agricultural produce is used as raw material in different industries or respective industries। Ma'am, different industries. हाँ, फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, कोकोनट, Tea, coffee, sugar cane, टी, coconut, कॉफी, रबर, शुगर केन, कोकोनट एक्सेट्रा, ETC लिखो, एक्सेट्रा, etc. are the raw material for their industries, are the raw material for their industries। उसी पॉइंट में लिख रहे हो इसको, ठीक है ना। जैसे टी है
तो टी तो ग्रीन लीफ तोड़ते हैं तो वो तो टी की तरह होता नहीं है। वो जब इंडस्ट्री में जाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका रोस्टिंग होता है, कई तरह से ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तब जाके टी जो है पैकेजिंग के बाद मार्केट में जाने के लायक तैयार होता है। तो उसको टी इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। कॉफी में भी क्या है, उसके बीन्स होते हैं कॉफी के, तो बीन्स को निकालना बस एग्रीकल्चर का काम है। और बीन को फिर जो प्रोसेसिंग करते हैं तो वो तो इंडस्ट्री का काम है। और इसी तरह से रबर, रबर क्या है, ट्रीज में उसके स्टेम में कट कर देते हैं, स्लिट कट कर देते हैं, और उसी से एक लैटेक्स निकलता है ना, गाढ़ा रंग, गाढ़ा सा एकदम ये निकलता है, जूस निकलता है उसका, और उसी को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं रबर इंडस्ट्री में। शुगर केन है तो शुगर मिल में चला जाता है, तो उसकी वहाँ पर वो किस में मैन्युफैक्चर होता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए सारा जितना रॉ मटेरियल इस एग्रीकल्चर से जितना भी प्रोड्यूस है वो सब का सब किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। कितने पॉइंट लिखे बताओ? मैम मैम 4 आई कैन, points. एक फिफ्थ पॉइंट लिखो तो। यस मैम बोलिए। Well developed means of transport and communication. Well developed. क्या मैम? Well developed means of transport and Well, communication. Well developed means 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 of transport and communication is very essential to connect the farm states, industries and market. To connect the farm states, ESTATES, farm states, industries and market. ये पॉइंट समझ गए कि जब बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशनल वर्क वहाँ होना चाहिए कि एग्रीकल्चरल फील्ड से सारा कोकोनट कैरी करके ले जाना है, कहाँ, इंडस्ट्री में ले जाना है। इंडस्ट्री में जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फिर कहाँ ले जाना है, उसको मार्केट में ले जाना है। तो इसलिए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल इन दिस एग्रीकल्चर, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कितने पॉइंट लिख लिए बोलो? 5 points. 5. हाँ, Yes, ma'am, 5 points. अधिश्री रीडिंग कर दो सारे पांचों पॉइंट्स के। In this farming, a single crop is grown on a large area. This large area is known as farm estates. It has an interface of agriculture and industry, which is capital intensive, and productions is also very high, like an industry. लाइक इंडस्ट्री। हाँ Migrant laborers are used. हाँ They produce is the produce is used as a raw material in respective industries. Example: tea, coffee, rubber, coconut, etc. are raw materials for their respective industries. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। Well developed means of transport and communication used to मैम इसके आगे थोड़ा सा गड़बड़ है. Are used to connect the farm estates, industry and the market. इन तीनों को कनेक्ट करना होता है। अरे राम लिख लिए ना? Yes ma'am. कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जल्दी पढ़ो तो हरे राम, टाइम खत्म हो रहा है। लास्ट पॉइंट पढ़ो। Ma'am, well developed means of transport and communication is very essential to connect farm states, industries and markets. ठीक है, नाउ टाइम इज कंप्लीट ओवर, है ना। आज यहीं तक रखते हैं। Good Thank you, afternoon, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. बाय, थैंक यू। Thank you. Thank you, ma'am.
ओके, थैंक यू मैम। हाँ ऋषित लिख लिए हो ना? यस मैम। शौर्य, सब बच्चे क्लास में बोला करो जब पूछते हैं ना रीडिंग के लिए। आर्यन कुमार, समृद्ध, है ना, रितेश कुमार। मान्या आजकल नहीं बोलती है, क्यों? हर्ष कुमार, हाँ, सब पार्टिसिपेट करना, ठीक है।